Good morning, students. So once again, welcome back in social science subject live class. Okay, for standard 8. I hope that the visibility is quite okay, beta. Is it visible properly? Is it visible properly, beta? Is the visibility okay? Yes. Please reply. Good morning. I am asking, is the visibility okay? Is the visibility okay? दिखाई अच्छे से दे रहा है? Okay? So, students, yesterday we had a discussion on what is secularism. Okay? Now, through that discussion, we come across, we can say, a definition of secularism. Okay, so whatever we have discussed yesterday, from that entire discussion, we have drawn out a definition of secularism. Got it? So today we are going to discuss on one more topic in that same chapter, and the topic is why is it important? The topic is why is it important to, okay, so the topic is why is it important to separate, why is it important to separate the religion from state. Okay, now this is what the topic given in our textbook, titled in our textbook. Okay, इस टाइटल से ये टॉपिक हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. ठीक, अब बेसिकली इस पूरे टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस थ्रू दिस टॉपिक? ठीक है, इस टॉपिक के जरिए हम बेसिकली ये डिस्कस कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, कहां पर? डेमोक्रेटिक कंट्रीज में. ठीक है, इस टॉपिक के जरिए हम बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम इस बात को डिस्कस करना चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में रिलीजन को स्टेट से, स्टेट पावर से सेपरेट करना क्यों जरूरी है. अब जब स्टेट पावर किससे सेपरेट है? रिलीजन से सेपरेट है. ओके, व्हेन द स्टेट पावर इज सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन, जब स्टेट पावर को किससे सेपरेट किया जाएगा? रिलीजन से सेपरेट किया जाएगा. तो दैट इज व्हाट वी कॉल इट, उसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल इट सेक्युलरिज्म. यानी सीधा सीधा ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में सेक्युलरिज्म क्यों जरूरी है. ओके, सो देयर आर बेसिकली द टू सेट ऑफ रीजन, यानी दो सेट ऑफ रीजंस हैं जिसके चलते हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसकी जरूरत पड़ती है? रिलीजन को स्टेट से सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है. ठीक है, एंड जो पहला सेट ऑफ रीजन है. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द फर्स्ट set of reason. What are we going to discuss? We are going to discuss on first set of reason. ठीक है, so इसमें हम
बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट सेट ऑफ रीजन, ठीक है, पहला कारण, ठीक। सो व्हाट इज द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन? द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन is related to the nature of democracy. Is my voice audible? Because yesterday few of the students have complained that audibility is a problem. So is my voice audible, students? Okay. So we are going to discuss on first set of reason. Why is it important to separate religion from state? Now the first set of reason is directly related to the nature of democracy. Okay, now what is that? Democracy, okay, democracy is based on, okay, so what is the first set of reason? The first set of reason is related to democracy. And what is it? That democracy is based on, okay, democracy is based on majority. So what is the first set of reason? The first set of reason is related to democracy. And what is it? That democracy is based on majority of votes. Okay. Now democracy किसके ऊपर बेस्ड होती है बेटा? मेजॉरिटी पर, है ना, यानी उसका शासन होगा जिसकी मेजॉरिटी होगी. Now in that case what happens in those countries where the people following the different religions are living? डेमोक्रेसी किसके ऊपर बेस है? मेजॉरिटी के ऊपर बेस है. अब डेमोक्रेसी मेजॉरिटी के हिसाब से काम करती है, तो वर्ल्ड के वो कंट्रीज और लगभग आज की डेट में भी देखा जाए तो वर्ल्ड के लगभग सारे कंट्रीज में डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं. Among these people following the different religion, okay, there is one religious majority group and there is the religious minorities group. Okay, so what is happening? The democracy is based on majority of votes. Now what happens if the religious minority group, if the religious majority group, if the religious majority group has access to power, okay, if the religious majority group has access to power, if the religious majority group has access to power, then they could try to dominate, they could try to dominate or persecute, they could try to dominate or persecute the minorities. Okay, so if the religious majority group has access to power, then they could try to dominate or persecute. Sorry for the spelling mistake. Okay, they could try to dominate or persecute the minorities. अब यदि क्या होगा, रिलीजियस मेजॉरिटी ग्रुप्स को एक्सेस टू पावर. नाउ रिलीजियस मेजॉरिटी ग्रुप एक्सेस टू पावर का मतलब, यदि
रिलीजन को किससे सेपरेट नहीं करेंगे, गवर्नमेंटल पावर, स्टेट पावर से सेपरेट नहीं करेंगे। तो क्या होगा, जो रिलीजियस मेजॉरिटी ग्रुप है, द रिलीजियस मेजॉरिटी ग्रुप हैज एक्सेस टू पावर। रिलीजियस मेजॉरिटी ग्रुप को पावर हाथ में आएगी, और जब रिलीजियस मेजॉरिटी ग्रुप के हाथ में पावर आएगी, देन दे कुड, तो वो क्या कर सकते हैं, दे कुड ट्राई टू डोमिनेट और परसिक्यूट। ठीक है, they could try to dominate or persecute the minorities। तो यदि रिलीजियस मेजॉरिटी ग्रुप के हाथ में पावर आ जाएगी, तो वो रिलीजियस मेजॉरिटी ग्रुप किसको परेशान करेगा, किसको प्रेशराइज करेगा, माइनॉरिटीज को प्रेशराइज करेगा। ओके, गॉट इट। In this case, the majority could easily prevent minorities from practicing their religion। ठीक है, यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, the majority group can easily stop। If it is happening, then what may be the possibility, the majority group can easily stop the minorities, the majority group can easily stop the minorities, okay, from practicing their religion। ओके, सो यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, इन दैट केस द मेजॉरिटी ग्रुप कैन इजीली स्टॉप द माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। यदि ऐसा होगा तो क्या पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ये है कि माइनॉरिटी ग्रुप जो है, जो मेजॉरिटी ग्रुप है, वो माइनॉरिटीज को उनका धर्म पालन करने से रोक सकते हैं। इट मीन्स द माइनॉरिटी ग्रुप्स वेर नॉट एबल टू फॉलो देयर रिलीजन फ्रीली। ओके, therefore the tyranny of the majority and the violation of fundamental right that can result to, one reason why is it important to separate the state and religion in democratic society। ठीक है, तो ये पहला रीजन है, that is what the tyranny or hold of majority। मेजॉरिटी ग्रुप को यदि स्टेट पावर एक्सेस है, यानी मेजॉरिटी ग्रुप यदि गवर्नमेंट की पावर को धर्म के आधार पर कंट्रोल कर सकता है, करेगा, तो फिर क्या होगा, मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, परसिक्यूट मतलब उन्हें समाप्त करने की भी कोशिश कर सकता है। ठीक है, और इस कंडीशन में जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो क्या करेगा, माइनॉरिटी ग्रुप्स को उनके धर्म का पालन करने से रोक सकता है। ठीक, यदि स्टेट गवर्नमेंट, सरकार मेजॉरिटी ग्रुप का साथ देना शुरू करेगी तो ये जो डोमिनेशन है वो लड़ाई झगड़ों में भी चेंज हो सकता है। दैट इज द मेजॉरिटी ग्रुप कैन, the majority group can spread the violence against the minority group। इन कंडीशंस में मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप के अगेंस्ट में किसका यूज कर सकते हैं, वायलेंस का। वायलेंस मतलब हिंसा का यूज कर सकते हैं। गॉट इट।
this is what the first set of reason why is it important to separate religion from state. Okay. Now we are going to discuss on the second set of reason. Okay. Now the second set of reason is again related to the freedom of individuals. Okay. The second set of reason is related to what? The freedom for individual. Okay. So what the second set of reason actually tells about? जो second set of reason है ना, वो basically क्या कहता है? According to this reason, it is important to separate the religion from the state in democratic society because we also need to protect the freedom of individual to exit from their religion, to embrace another religion, or to have the freedom to interpret religious teachings differently. Okay, so why is it required? Okay, because we need to protect. So what is the second set of reason for separation? The second set of reason for separation is basically for that we need to protect. We need to protect the freedom of individual. We need to protect the freedom of individual we need to protect the freedom of individual to exit from, I am again repeating, we need to protect freedom of individual to exit from their religion, embrace another religion, embrace another religion. Okay, so we need to protect the freedom of individual to exit from religion, to embrace another religion, or have the freedom to interpret. Okay, we need to protect the freedom of individual to exit from religion, embrace another religion, or have the freedom to interpret religious teaching, interpret the religious teachings differently. Okay, now this is what required. Okay, so what is the second set of reason? Second set of reason क्या कह रहा है? It is telling about the freedom of individual. जो फर्स्ट सेट ऑफ रीजन था वो किससे रिलेटेड था? मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप से. ठीक है. सेकेंड सेट ऑफ रीजन किससे रिलेटेड है? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के स्वयं की आजादी किससे रिलेटेड? अपने धार्मिक मामलों से रिलेटेड. ओके, तो द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन वाज बेसिकली द इशू बिटवीन द मेजॉरिटी ग्रुप एंड माइनॉरिटी ग्रुप. Okay, now this set of reason is basically what? The freedom of individual. एक सिंगल व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, सिंगल व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में डिस्कस कर रहा है. What it says that we need to protect freedom of individual to exit from religion.
व्यक्ति को भी, हर व्यक्ति को यह आजादी होनी चाहिए कि यदि वो व्यक्ति किसी धर्म में, जिस धर्म के परिवार में वो उसका जन्म हुआ है, यदि वो व्यक्ति अपने उस धर्म को छोड़ना चाहता है तो उसको उसकी क्या होनी चाहिए, आजादी होना चाहिए। सो फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एग्जिट फ्रॉम रिलीजन। व्यक्ति को जिस धर्म में उसका जन्म हुआ है, ठीक है, वो यदि उस धर्म को छोड़ना चाहता है तो व्यक्ति को उसकी आजादी होना चाहिए। द पर्सन मस्ट हैव फ्रीडम टू एम्ब्रेस अनदर रिलीजन। व्यक्ति को फ्रीडम मिलना चाहिए कि वो क्या कर सके, किसी दूसरे रिलीजन को अडॉप्ट, एक्सेप्ट, एम्ब्रेस कर सके। और द पर्सन मस्ट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। ठीक है, व्यक्ति के पास यह आजादी होनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपने धर्म की रिलीजियस टीचिंग का अपने नॉलेज के हिसाब से फॉलो कर सके और मतलब निकाल सके। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल रिलीजियस टीचिंग है ना, फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। ठीक है, ऐसे अभी नवरात्रि का उत्सव चल रहा है ना बेटा, अभी क्या चल रहा है, नवरात्रि का उत्सव चल रहा है। अब इस नवरात्रि के उत्सव में बहुत सारे लोग 9 दिन का उपवास रखते हैं, है ना, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 9 दिनों का उपवास नहीं रखते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली टेंपल विजिट करते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर विजिट करते हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे हैं जो मंदिर विजिट नहीं करें। ठीक, सो रिलीजियस, दैट इज द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। ये जो आजादी है वो क्या करती है, हर व्यक्ति को इस बात का फ्रीडम प्रोवाइड करती है कि भले ही हम सभी ऑफिशियली किसी एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, है ना, जैसे मैं हिंदू हूं, ठीक है, मेरी वाइफ भी हिंदू रिलीजन को फॉलो करती है, मेरे मदर फादर हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाता हूं वो लोग भी हिंदू रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, परंतु क्या हम सभी के लिए एक जैसा नियम नवरात्रि उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जा सकता है? क्या टेंपल जाना सभी के लिए कंपलसरी कर दें? नहीं। क्या सभी को उपवास करना कंपलसरी कर दें? नहीं। ओके, सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन को स्टेट पावर से क्यों अलग किया? अलग करने में क्या होगा, द पीपल, दैट इज इंडिविजुअल पर्सन हैज फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। व्यक्ति को अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करने का और उसके हिसाब से फॉलो करने की आजादी। ठीक है, तो हम सभी हिंदू हैं, जो लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं उनके लिए बात कर रहा हूं। तो यदि सभी लोग हिंदू हैं तो भी डिपेंड करता है, जैसे टेंपल जाना है, मंदिर जाए श्रद्धा से, ठीक है, फूल पत्ती चढ़ाए नहीं चढ़ाए, अगरबत्ती लगाए नहीं लगाए, उसकी अपने मन की भावना है। Okay, so that is what the first set of reason is all about. The first set of reason, that is why is it important to separate religion from state? Because we need to protect the freedom of individual to exit from religion. ठीक है? Then we need to protect that the individual can embrace another religion or have the freedom to interpret the religious teachings differently. ठीक है, तो व्यक्ति को ये आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी जो रिलीजियस फ्रीडम है, जो रिलीजन है, उसको क्या अपने हिसाब से समझे और अपने हिसाब से वर्कआउट करे। गॉट इट? So it helps to
protect the weaker section, okay, so it has to protect the weaker section of one religious group, okay. तो separation of religion क्या करता है? It has to protect the weaker section of one religious group, okay. It has to protect the weaker section of one religious group against the dominant group, against the dominant group in same religion, ठीक है. Now, so what does it do? That is separation of religion from state से क्या बेनिफिट है? ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट क्या करता है? इट हैज टू प्रोटेक्ट ये किसी एक रिलीजियस ग्रुप में जो वीकर सेक्शन है, ओके, उसको किससे बचाता है? अगेंस्ट द डोमिनेंट ग्रुप इन द सेम रिलीजन. यानी यहां पर दो अलग अलग धर्मों के इशू के बजाय एक सिंगल रिलीजियस में, एक ही धर्म में यदि एक ग्रुप डोमिनेंट है और दूसरा ग्रुप वीकर है, ठीक है. अब डोमिनेंट मतलब उस धर्म में कुछ ऊंची जाति के लोग ऐसे हैं, उच्च वर्ग के लोग ऐसे हैं जो उस धर्म के सारे मैटर्स को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, ठीक है. और एक सेक्शन ऑफ रिलीजियस ग्रुप, सेम रिलीजियस ग्रुप में एक वर्ग ऐसा भी है जो कंपैरेटिवली वीक है. तो ये जो सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट है वो क्या करता है? वो वीकर सेक्शन ऑफ द रिलीजियस ग्रुप को उन लोगों के डोमिनेशन से बचाता है जो उसी रिलीजियस ग्रुप में किस पोजीशन पर है? डोमिनेंट पोजीशन पर है. गॉट इट? सो विद इन द सेम रिलीजियस ग्रुप, विद इन द सेम रिलीजियस ग्रुप, एक ही रिलीजियस ग्रुप में वीकर सेक्शन को ये क्या करता है? डोमिनेंट से बचाता है. गॉट इट बेटा? सो दैट इज व्हाट द टू सेट ऑफ रीजंस. ओके, द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन जो है, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया, वो क्या कहता है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन ऑफ स्टेट, ठीक है. रिलीजन और स्टेट का सेपरेशन क्या कर रहा है? एक रिलीजियस मेजॉरिटी से, रिलीजियस मेजॉरिटी ग्रुप से इसको प्रोटेक्ट करता है, रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है. और सेकंड सेट ऑफ रीजन इंडिविजुअल के फ्रीडम की बात करता है और सेम रिलीजियस ग्रुप में, उसी धार्मिक समूह में जो कमजोर सेक्शन है उसे, जो ज्यादा डोमिनेंट सेक्शन है उसके डोमिनेशन से बचाता है. ओके, सो दैट इज व्हाट द टू सेट ऑफ रीजंस ड्यू टू विच वी हैव द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट. ठीक है. सो रिलीजियस मैटर्स को स्टेट मैटर्स से इसलिए सेपरेट करना जरूरी है क्योंकि ये दो सेट ऑफ रीजंस हैं. इन दो कारणों से ये जरूरी है कि वी नीड टू adopt the policy of secularism in our country. Okay, so this particular topic is over, students. Okay, now since the one single topic is over and if we would start one more topic today itself, then we may not be able to complete that topic today. Okay, so we are winding up our sessions right now.
so that each day we will be able to complete one single topic. Okay, so that's all for today live class, students. So we'll meet again tomorrow at the same time. Okay, so thank you, students. Goodbye.